Students, welcome to my YouTube channel Life is Easy with Biology. Let's begin with today's topic, megasporogenesis. Now in the last video where I've ended in the ovary, the structure of the ovary, we have seen how is the ovule placed inside the ovary within the ovarian cavity and how within the ovule embryo sac is formed, right? But the process by which the embryo sac is formed within the ovule will be dealt in this video, that is megasporogenesis. Now we need to first define or understand the topic, what is megasporogenesis. Genesis, the term genesis means formation. The process of formation of megaspore from a single megaspore mother cell that is present at the micropylar end of the nucleus is called megasporogenesis. This process takes place with the help of meiosis. So single megaspore mother cell when undergoes meiosis, which is a reductional cell division, 4 megaspore is formed. Okay, 4 megaspore is formed. But out of this 4 megaspore, 3 megaspore degenerate. 3 megaspore degenerate and only one functional megaspore is left. From one functional megaspore, embryo sac is formed. Okay, from one functional megaspore, embryo sac is formed like this. See, megaspore mother cell जो micropylar tip में at the micropylar region in the nucleus which is abundant in reserve food material, वहाँ पे meiosis में undergo करता है, undergoes meiosis, जहाँ पे 4 cells produce होते हैं because it is a reductional division, जिसमें से 3 cells डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. सिंस एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर, द प्रोसेस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनो मीन्स सिंगल स्पोर का डेवलपमेंट, सो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. नाउ द एम्ब्रियो सैक हैव अ न्यूक्लियस. इनसाइड द एम्ब्रियो सैक देयर इज अ न्यूक्लियस, राइट? Inside the embryo sac there is a nucleus. This nucleus undergoes the process of mitosis. This nucleus within the embryo sac undergoes the process of mitosis to give rise to first 2 nucleate. Then this 2 nucleus will undergo further mitosis to produce 4 nucleate. एक यहाँ से डिवाइड होता है, 2 में टूटेगा, ये 2 में टूटा तो 4, फिर ये 4 अलग अलग टूटा तो कितना बन गया? 8, राइट? From 4, if mitotic division takes place of 4 nucleus, how many nucleus are obtained? 8 nucleus. Now these nucleus then gets arranged in this manner. 3 of the cells at the chalaza end, that these cells are called antipodal cell, and 3 cells on the micropylar end called the egg apparatus, while 2 nucleus are encompassed within a single cell. ठीक है, यहाँ पे सेल्यूलर डिविजन नहीं हुआ. ये जितना भी डिवीजन हो रहा था, माइटोटिक डिवीजन, दैट इज फ्री न्यूक्लियर, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा था, पर साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन नहीं हो रहा था. तो जब सेल डिवीजन होता है तो 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स जो चलाजा एंड पर अरेंज हो जाते हैं और 3 सेल माइक्रोपाइलर टिप पे एग अपैरेटस फॉर्म करते हैं, पर 2 न्यूक्लियस ऐसा है जो एक सिंगल सेल के अंदर है. ठीक है, तो दिस कैन बी सीन बाय दिस diagram here. You can see at the chalaza end there are 3 cells called the antipodal cells. At the micropylar end there are 3 cells called the egg apparatus, out of which 2 is called synergid and 1 is called egg cell. Fine. This synergid, at the base of the synergid, filiform apparatus is present. Filiform apparatus का काम क्या है स्टूडेंट? टू गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एग सेल. क्योंकि जो पोलन ट्यूब अपने साथ मेल गैमीट ला रहा है, वो मेल गैमीट को पहुंचना कहाँ है? एग सेल के पास, क्योंकि एग सेल ही फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है. ओके, नाउ इन द सेंट्रल सेल देयर आर 2 न्यूक्लियस, polar nuclei is present. So count student, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 nucleus is there and how many cells? 3 4 5 6 7. So 7 celled 8 nucleate stage. This is called 8 nucleate 7 celled stage. Okay, we will deal in about the topic pollination, how the pollen grain which carries the male gamete reaches the female reproductive part of the flower. What is the process called? What are the different ways by which pollination is conducted in my next video. Till then, stay connected. Hope you like the video, and if you do so,
Do like, comment and subscribe to my channel.